Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari 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 Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Natida Vanachari Natida Vanachari Natida Vanachari Natida Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari 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 Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Munatira Vanachari Munatira Vanachari Munatira Vanachari Munatira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya 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 Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Stotra Sri Srimad A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Stotra Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Namacharya Sridhar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sapaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakti Sri Sri Radha Krishna Gopinath Sham Kunj Radha Kunj Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Navadip
धाम की जय, जगन्नाथ पुरी की जय, गंगमयी की जय, जमुनमयी की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, समवेत भक्त की जय. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Lord Premanande. Om Ajnanatimidandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Ayam Rupa Kada Mayam Tadhati Shapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jata Patakamanam Vaishnavamscha Shri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sapta Kamshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Bhopatarubhyascha Kripa Sindho Jayadvaita Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'm not going to speak on the announced topic. तो मैं जो टॉपिक अनाउंस किया था उस पर बोलने नहीं जा रहा हूँ. Too easy. वो बहुत सरल है. Rather, we'll continue our study of Bhagavad Gita, which we've been studying the last few days. तो उसके बजाय हम जो भगवद गीता का जो श्लोक हम ले रहे थे उससे आगे हम बढ़ेंगे. Is that all right? ये ठीक है. So this is chapter 17, text 11. And if you have a mobile that you're not using for the class, this is the time to turn it off. Apala kankshibhir yagyo vidhi dishto yajjate yashtavyam eveti manaha samadhaya sasatvikaha. शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य. ट्रांसलेशन. यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते. तात्पर्य. सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए. इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए. उदाहरण अर्थात मंदिरों या गिरजाघरों में
मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल या प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। In this 17th chapter, the Lord has been describing three kinds of shraddha or faith. इस 17वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार की श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं। And characteristic activities in these three, according to the three gunas. और उसके लक्षण भी बता दें कि 3 गुणों के अनुसार कौन किस गुण में रहता है। Food and the 3 modes of material nature, knowledge and the 3 modes, and so on. भोजन और ज्ञान अलग अलग 3 गुणों का किस प्रकार रहता है, ये सब इसमें बताया गया है। Charity in 3 modes. दान भी 3 गुणों में कैसे होता है। Tapasya. तपस्या भी। So here, yajna. और यहाँ पर यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। Yajna according to 3 qualities. तो यज्ञ बताया जा रहा है 3 गुणों के अनुसार। First, yajna in goodness. तो सबसे पहले सतोगुणी यज्ञ। Apala kanshibhi. Yajna performed in goodness is performed not to get something, but because it's my duty to do it. तो सतोगुणी जो यज्ञ होता है वो किसी कार्य की अपेक्षा नहीं की जाती, उसमें किसी फल की अपेक्षा नहीं की जाती, एक कर्तव्य समझ के किया जाता है। The mother takes care of the child not because someone pays her. तो जैसे माँ अपने पुत्र का ख्याल रखती है, वो इसलिए नहीं रखती क्योंकि कोई सिर्फ उसके लिए पैसे देता है, Or because her name will be in the newspaper. This mother took care of her child. और वो ऐसा नहीं सोचते कि अपने पुत्र का ख्याल रखने से उसका नाम अखबार में आएगा। It's her natural business to take care of the child. और ये उनका कर्तव्य है अपने पुत्र का ख्याल रखना। So yajna in the mode of goodness is performed in a similar spirit. This is what I should be doing. तो सतोगुण भी उसी चेतना के अनुसार, ये सतोगुण यज्ञ किया जाता है, उसी चेतना के अनुसार किया जाता है। I should be performing some sacrifice. कि मुझे कुछ ना कुछ यज्ञ तो करना ही है। Not that I calculate what will I get from it. ऐसा नहीं कि मैं गणना करके बोलूं कि ऐसा करने से मुझे क्या लाभ होगा। The modern propaganda is that religion is good if it helps social progress. आधुनिक लोग धर्म को कहते हैं कि धर्म अच्छा है क्योंकि ये हमारी सामाजिक स्थिति को सुधारता है। If we get something out of it. अगर इसमें से हमें कुछ लाभ है तो अच्छा है। No. ऐसा नहीं है। Sacrifice or spiritual activities are good because that's what we're supposed to do. और यज्ञ और आध्यात्मिक क्रियाकलाप ठीक है क्योंकि वही उसी को हमें करना चाहिए। Krishna is the supreme master. God is the supreme master of all living beings. We're all his servants, so we should be offering service. कृष्ण सर्वे सर्वा हैं और हम उनके दास हैं, तो इसलिए हमें उनकी सेवा करनी ही चाहिए। The hand takes the food and gives it to the stomach. It doesn't think, what am I going to get from this? तो जिस प्रकार से जो हाथ है वो भोजन को ग्रहण करता है और पेट को देता है, वो ऐसा नहीं सोचता कि इसमें से मुझे क्या मिलने जा रहा है। This is my business. I'm the hand. I give to the stomach. That's it. क्योंकि मैं हाथ हूँ और ये मेरा कर्तव्य है भोजन को पेट तक पहुँचाना। Oh, apala kanshibhir yajyo and vididishta. Vididishta means that one acts according to the direction of Shastra. विधिदिष्टों का मतलब है कि जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कार्य करता है। Vidhi means there are some rules and regulations. विधि का मतलब है वहाँ कुछ नियम कानून है। Not that I make up my own idea of what is yajna. ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से सोचूं कि यज्ञ कैसे किया जाता है। But I have to follow the rules. मुझे नियमों का पालन करना जरूरी है।
vidhidishtam. Yashtavyam eveti manaha. One thinks, this is what's supposed to be done, therefore I will do it. एक सोचता है क्योंकि इसे करना ही है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए वो कार्य ये यज्ञ करता है. Samadhaya susatvika. This is in the mode of goodness. और इस प्रकार का यज्ञ सत्वगुणी यज्ञ कहलाता है. Not that I'll do it if I get something out of it. If I don't get something out of it, I won't do it. Or I'll do it according to my own idea of what to do. No, this is according to Shastra, what to do, so I'll do it. तो एक व्यक्ति ये सत्वगुणी यज्ञ इसलिए करता है क्योंकि वह सोचता है कि ये मेरा कर्तव्य है इसे करने का. ऐसा नहीं सोचता कि क्योंकि इससे मुझे कुछ लाभ होने जा रहा है इसलिए मैं इसे करूँगा. In the army, when the order comes to the sergeant, you do this. He doesn't think, well, they said do this, but I'll do it a different way. तो जिस प्रकार से सेना में जब ऊपर से जनरल सैनिक को आदेश देता है तो सैनिक वैसा ही कार्य करता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता. Or he doesn't calculate, if I do this, what will I get from it? वो सैनिक ये नहीं सोचता है कि अगर मैं इसका आज्ञा का पालन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा. Will I get a promotion? Will they increase my pay? क्या मेरी पदोन्नति मुझे मिलेगी या मेरी सैलरी में इंक्रीज होगा. It's my business. I'm the sergeant, the lieutenant or the general has ordered, I'll do it. क्योंकि मैं सैनिक हूँ और ये इनके जनरल का आज्ञा का कहना मानना मेरा कर्तव्य है. That's goodness. और इसे सत्वगुणी कहा जाता है. Then, avisandhaya tupalam. Avisandhaya tupalam dambhartam apichayvayat. Ijate bharata shreshta tam yagyam vidhi rajasam. तो इसका अनुवाद है, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो. और तात्पर्य है, कभी कभी स्वर्गलोक पहुँचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं. ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं. Abhisandhaya tu palam, to get something. अभिसंधाय तो फलम का मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए. And dambharta. Dambharta means for the sake of false prestige or pride. और दम्भार्थ का मतलब है जो गर्ववश किया जाता है. I performed this yajna. कि मैंने ये यज्ञ किया है. I performed 108 yajnas. और मैंने 100 यज्ञ किए हैं. I performed this, I performed that, I put it on your CV, I did this, I did that. तो मैंने ये यज्ञ किया है, मैंने वो यज्ञ किया है, जैसे हम नौकरी के लिए CV में डालते हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है. Dambharta, for the sake of reputation. ये सब हम अपनी यश को प्राप्त करने के लिए करते हैं. Pride. गर्व के लिए, घमंड के लिए. This is also in the mode of passion. इसे रजोगुणी यज्ञ कहा जाता है. If people are watching, he'll perform the yajna, otherwise no need. तो इसलिए क्योंकि लोग देख रहे होते हैं इसलिए हम यज्ञ करते हैं, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है. Vitihinam ashishtanam mantrahinam adakshinam shraddha virahitam yagyam tamasam parichakshite. जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है. You need a sign outside the temple door. हाँ मंदिर में. The sign isn't necessary. People won't follow it anyway, but at least you could say you told them. Did you finish? तात्पर्य, तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है.
कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। Mantrahinam, performing the yajna any which way, no mantras chanted, अगर कोई यज्ञ किया जाता है बिना किसी मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, or some bogus mantra, और कोई बोगस मंत्र अगर बोला जाता है, and ashrishtanam, the yajna is performed but no prasadam. और यज्ञ किया जाता है लेकिन कोई प्रसाद वितरित नहीं किया जाता। When there's a yajna performed, there must be distribution of prasadam. और जहाँ कहाँ भी यज्ञ किया जाता है तो वहाँ प्रसाद का वितरण जरूर होना चाहिए। In the Sankirtan yajna, a big part of the yajna is to see that there is profuse distribution of prasadam. तो संकीर्तन यज्ञ में उसका एक बहुत बड़ा जो भाग रहता है उसमें ये देखा जाता है कि प्रसादम बहुत पर्याप्त मात्रा में बांटा गया है। When Srila Prabhupada began the Sankirtan movement in the West, he always made sure there was distribution of prasadam. जब प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कि हमेशा प्रसाद जरूर बांटा जा रहा है। Something had to be there. कुछ न कुछ तो जरूर दिया जाता है। Maybe an apple, maybe something had to be there. चाहे सेब हो या कुछ भी हो, कुछ न कुछ जरूर प्रसाद के रूप में दिया जाता है। I remember sitting in some big engagement and Prabhupada was speaking at a church and no prasadam was arranged. So Prabhupada told someone that no, there must be prasadam, and one devotee was sitting there cutting up apples for all the people who attended. तो महाराज जी बता रहे हैं कि प्रभुपाद उनको एक घटना याद आ रही कि एक बार प्रभुपाद किसी चर्च में बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उसमें प्रसाद खत्म हो गया था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रसाद का जरूर कुछ इंतजाम किया जाए। तो एक भक्त वहाँ पर बैठ के सेब को काट के लोगों को दे रहा था। There must be prasadam. प्रसादम होना बहुत जरूरी है। And if possible, there should be big distribution of prasadam. और प्रसाद तो होना ही चाहिए और संभव है तो बहुत अच्छी तरह प्रसाद और बहुत खूब पर्याप्त मात्रा में बांटना चाहिए। But there must be prasadam. लेकिन प्रसाद जरूर होना चाहिए। That's an essential part of the yajna. ये बहुत ही जरूरी अंग है यज्ञ का। फीस्ट प्रसाद में शुरू फीस्ट। Yeah, possible a feast. संभव है तो फीस्ट ही देना चाहिए। Just like there's vivaha yajna, a marriage. So there's rituals and pouring this and pouring that, and there's mantras chanted and all of that. All right, now finished. जैसे हम विवाह संस्कार में देखते हैं कि बहुत सारे रीति रिवाज किए जाते हैं, अग्नि में ये डाला जाए वो डालता है, और वैसे ही अग्नि होगी उसके बाद बोलते हैं चलो ठीक है बाय बाय जाओ। No, there has to be a feast. वहाँ फीस्ट जरूर होना चाहिए। So all of the yajnas, there should be opulent distribution of prasadam, or at least some distribution, whatever we can manage. There must be prasadam. तो जहाँ भी यज्ञ हो रहा है तो वहाँ प्रसाद का जरूर वितरण होना चाहिए। अगर ऐश्वर्य नहीं है कुछ न कुछ तो जरूर बांटना चाहिए। Otherwise, the yajna is performed in the mode of ignorance. नहीं तो इस प्रकार का यज्ञ तमोगुणी यज्ञ कहलाता है। Means one doesn't know what he's doing. एक को पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। Mantrahinam, ashishtanam, vidihinam. Vidihina means without following the rules and regulations. Ashrishtanam, mantrahina. Vidihina means without following rules and regulations. विधिहीन का मतलब है बिना किसी नियम कानून के पालन करने से। He just does something and this is the sacrifice we're doing, but he doesn't know whether it's according to Shastra, according to mental concoction. लोग यज्ञ करते हैं, करने के लिए कहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो किस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं। ये अपने मन घड़ंत तरीके से यज्ञ करते हैं। People make up so many things and they say this is a yajna. लोग कुछ भी करते हैं यज्ञ के नाम पर और बोलते हैं ये यज्ञ है। Just like sometimes we find now people are doing, what do they call it? Agnihotra yajna. कभी हम देखते हैं कि लोग अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे हैं। What is that Agnihotra yajna? They wave a deep and they say a little something and that's their daily Agnihotra yajna. वो कुछ दिया को जलाते हैं, दिया दिखाते हैं और बोलते हैं ये हमारा प्रतिदिन का अग्निहोत्र यज्ञ है। But this is not Agnihotra yajna. लेकिन इसे अग्निहोत्र यज्ञ नहीं कहते हैं। Agnihotra yajna is a big thing. अग्निहोत्र यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है। So many Brahmins, so many mantras, so many
rituals. It's not. बहुत सारे ब्राह्मणों, बहुत सारे मंत्रों और बहुत सारे रीति रिवाजों की जरूरत होती है. Therefore, these things were done in the Purva Yuga, previous age. इसलिए ये इस प्रकार के यज्ञ पिछले युगों में किए जाते थे. The utensils were made of gold and so many things. जो बर्तन थे वो सब सोने के भी बनते थे. Mantras were chanted exactly, correctly by qualified Brahmins. मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से योग्य ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था. There was some years ago, one group organized with, I think with the help of some Western professor, they organized I think Agnihotra Yajna. कुछ सालों पहले एक समूह ने कुछ प्रोफेसरों की सहायता के द्वारा एक अग्निहोत्र यज्ञ किया था. And it took years to organize. और ये सालों सालों लग गए इस यज्ञ को करने में. Because according to the regulations, the altar has to be made in exactly this way, with this kind, by this kind of Brahmin, from this kind of community. क्योंकि विधि के अनुसार जैसे कोई अल्टर बना, विधि जो बनानी थी वो विशेष ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाई जा रही थी. On this date. और किसी मुहूर्त के अनुसार. And this has to be done this way, by this kind of Brahmin, and this. और हर एक कार्य के लिए विशेष ब्राह्मणों की जरूरत थी. And where were those Brahmins? और ऐसे ब्राह्मण हैं कहाँ? Where were the Brahmins who even remembered the mantras? ऐसे ब्राह्मण भी नहीं हैं जो यहाँ तक कि मंत्र को भी याद रख सकते हैं. In this community, maybe there was one old Brahmin left, and his son was going to IIT to study information technology. इस समूह में कोई ब्राह्मण था, लेकिन उनका पुत्र अभी IIT जा रहा है. So finally they organized the yajna. They wrote a book about it also, and in the book it was said that probably this is the last time this yajna will be performed. तो अंततः उन्होंने किसी भी प्रकार से यज्ञ संपन्न किया. उसके साथ साथ एक किताब लिखी. उस किताब में लिखा कि संभवतः ये हमारा ऐसा यज्ञ लास्ट बार हो रहा है कहीं. Because who can meet the requirements? कि वास्तव में कोई भी इस प्रकार की आवश्यकता को, यज्ञ की आवश्यकता को नहीं मिल सकती. And then some people come along with some mental concoction. You wave a deep before the altar, and this is your daily Agnihotra Yajna. और कुछ लोग ऐसी विग्रह के सामने आते हैं और भगवान को दिया दिखाते हैं और बोलते हैं आपका प्रतिदिन का अग्निहोत्र यज्ञ हो गया. It's meaningless. ये व्यर्थहीन है. Vidhihina, doesn't follow the rules and regulations. ये लोग नियम कानून का पालन नहीं करते. Vidhihinam, Ashrishthanam, Mantrihinam, and Adakshinam. When the yajna is performed, some gift must be distributed to the priests. जब यज्ञ किया जाता है तो पुरोहित के द्वारा कुछ न कुछ उपहार जरूर वितरित किया जाता है. दक्षिणा के रूप. We find that when Yudhishthira Maharaj performed Ashwamedha Yajna, हम देखते हैं जब युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था, he distributed so much charity to the, बहुत कुछ दान में उन्होंने दिया था. To the priests and the Brahmins, so many. तो बहुत सारे पुरोहित और ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया था. He gave them so many items made of gold that as they accepted, the Brahmins accepted them, but as they were on their way journeying home, they just left it because it was too much. उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा सोने दान में दिया था, लेकिन उन ब्राह्मणों ने घर जाते समय रास्ते में छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था. Or maybe that was a previous king, I think so. Anyway, they used to give so much charity. वे बहुत सारा दान देते थे. Now, in the mode of ignorance, either we don't give anything, अभी तमोगुण में या तो हम कुछ भी नहीं देते, or it's a fee calculation. Brahmin is supposed to do his service, then he accepts charity, but in the Kali Yuga he's got a rate card. पहले के युग में ब्राह्मण अपना सेवा करता था और दान में जो भी प्राप्त होता उससे संतुष्ट रहता था, लेकिन अभी उनके पास रेट लिस्ट रहती है, मेनू कार्ड रहता है. This is how much I charge for this. This is how much I charge for that. कि हर एक यज्ञ के लिए उनकी रेट लिस्ट होती है. ये यज्ञ करेंगे तो इतना पैसा. That means Shudra. इसका मतलब शूद्र है वो, ब्राह्मण नहीं. But adakshina, in the mode of ignorance, nothing given to the priest. And shraddha virahitam, without faith. और इस प्रकार के बिना किसी विश्वास के किया जाता है. He has no serious faith in the thing, but he's doing it because his wife asked him,
or to impress somebody, or he doesn't even know why he's doing it, he's just doing it. एक व्यक्ति इस प्रकार के यज्ञ करता है, वास्तव में उसका यज्ञ करने में कोई विश्वास नहीं होता, लेकिन पत्नी के कहने पर या किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो यज्ञ करता है, or someone's pressured him to do it. और कोई उसे दबाव डालता है तब वो यज्ञ करता है. That also we see. You go to the bank of the Ganga in Benares or someplace like that, and you're going as a tourist, practically speaking, and the Brahmin grabs you. Come on, sit here. इस प्रकार के दृश्य आमतौर से गंगा नदी के तट पर अगर बनारस में जाएं आप देखने को मिलेंगे कि वहाँ के जो लोकल पंडित लोग हैं, कोई अगर कोई फॉरेन से आया है, कहीं विदेश से आया है, तो उसको पकड़ के बोलते हैं कि यहाँ पर आइए बैठिए. All right, Om, 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 और इस प्रकार के मंत्र बोलते हैं. Throw something here, throw something there. और कुछ इधर फेंकते हैं, कुछ उधर फेंकते हैं. So he's sitting there, he doesn't know what he's doing. He has no faith in the process, but still he's doing this yajna. It has no meaning. तो इस प्रकार के वहाँ पर बैठे तो रहते हैं, लेकिन उनका कोई विश्वास नहीं होता इस प्रकार के रीति रिवाजों पे, तो इस यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है. Yes, I went to the Ganga, we did a yajna. कि उसको लगता है कि मैं गंगा नदी के तट पे गया और वहाँ कुछ तो यज्ञ किया. And the most important part. और उस यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो रहता है वो फोटोग्राफी रहती है, तो फोटो जरूर खींचा उधर. Vidihinam ashrishtanam mantrahinam adakshinam shraddha virohitam yagyam tamasam parichakshate. So this is yajna in the mode of ignorance. तो इस प्रकार का यज्ञ तमोगुणी यज्ञ कहलाता है. Therefore in the Kali Yuga, only the Sankirtan yajna is recommended. इसलिए कलियुग में केवल संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताया गया है. And it should be performed simply for the satisfaction of Krishna. और ये यज्ञ केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, Not to earn a living. अपने जीविका चलाने के लिए नहीं. That also we find in many places, that there's people who are doing kirtan, but it's simply to maintain their family members, getting some money. ऐसा हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे कि लोग भगवान के नाम पर कीर्तन तो करते हैं, लेकिन अपनी जीविका चलाने के लिए. They go from place to place, they perform kirtan, and it's only for money. एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन केवल पैसा प्राप्त करने के लिए. In Mayapur one year, there was the managers arranged a Sankirtan competition. कुछ साल पहले मायापुर में एक मैनेजर ने संकीर्तन का प्रतियोगिता कराई थी. Maybe 1976. 1976 में. And they invited so many kirtan groups from all over Bengal. और उन्होंने बहुत सारे कीर्तन ग्रुप को बुलाया था पूरे बंगाल से. And the groups would come and chant Hare Krishna, and then they'd be graded. How good was the mridanga player, how good were the kartals, how good were the singer, how good was their dress, how good was their dancing. और जब सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के ग्रुप के साथ कीर्तन कर रहे थे तो उनको रेटिंग दी जाती, कौन मृदंग अच्छा बजाया, कौन करताल अच्छा बजाया, कौन कीर्तन अच्छे किए. It was organized to bring people closer to ISKCON. तो इसलिए इसका उद्देश्य जो था वो सभी लोगों को ISKCON के करीब लाने के लिए किया था. Anyway, the stage was set up and these groups are doing their thing. तो वहाँ पे स्टेज था, सारे लोग अपने कीर्तन कर रहे थे. And they're so expert. और वो बहुत ही दक्ष थे अपने. The mridanga player can play so many bowls, so many beats, so many things. जो मृदंग बजाने वाले थे वो भी बहुत अच्छी तरह जानते थे मृदंग अलग अलग टून को. And the dancers dancing. और जो नृत्य करने वाले थे वो भी बहुत अद्भुत. And the singer singing Hare Krishna. और जो गायक थे वो जैसे महाराज ने दिखाया वैसे ही गा रहे थे.
So at that time, Srila Prabhupada was there. He was a little indisposed. और प्रभुपाद जी वहाँ थे, His health was not very good. उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। But he was staying in the Lotus building. वो जो लोटस बिल्डिंग है वहाँ मायापुर में, वहाँ पे रह रहे थे। And he sent word down, turn off the amplifiers. और उन्होंने कहा कि साउंड सिस्टम बंद ही कर दो। Prabhupada said they're simply chanting for money. प्रभुपाद ने उनको कहा कि ये गा रहे हैं लेकिन केवल पैसा प्राप्त करने के लिए। So that's not wanted. तो ऐसा अपेक्षित नहीं था। The Sankirtan should be performed by pure devotees of the Lord. जो संकीर्तन यज्ञ किया जाता है वो शुद्ध भक्तों के द्वारा किया जाता है। Apala kankshi vir yogyo, not expecting any benefit. कुछ भी वापसी में नहीं मांगा जाता इस यज्ञ के द्वारा। We'll win the competition, we'll get a prize, we'll become more famous. वो लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग प्रतियोगिता में हैं तो अगर हमको इनाम मिलेगा और हम लोग प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। That's not wanted. ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। We'll chant Hare Krishna because it's our business to chant Hare Krishna. Because we want to chant Hare Krishna. हम लोग हरे कृष्ण मंत्र को बोलते हैं क्योंकि हमें बोलना चाहिए। Krishna is the supreme personality of Godhead. He is glorious, so we should glorify him. तो कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भगवान है तो हमें उनको गुणगान करना चाहिए उनका। Not if you pay me, I'll sing. If you don't pay me, then I'm quiet. ऐसा नहीं कि अगर मुझे पैसा देंगे तभी मैं गाऊंगा और आप मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं चुप रहूंगा। It's not a business. ये कोई व्यवसाय नहीं है। Nor do we want